Hi everyone, welcome to OAS Hub. My name is Shiv Shankar Hazra, the co-founder and the mentor of OAS Hub. Obviously, OAS prelim for the 2023 is over. Jehetu prelims is over, there is also a debate on whether debate and obviously I would say the anxiety on how our prelim habo ki nahi. Jodi prelims haba kete cut off darkar, kon ame padhiba ki nahi. Dekho, first of all, I would say irrespective of the prelims cutoff, please start preparing for the mains. So you have to start preparing for the mains. Now, why? Because when you dreamed for the OPSC, OAS dream that time tame selection kotha bhabita. It was not about the prelim. It was about the final selection. It was about the final selection. Final rank kotha me discuss kar. Then you will be in the ways, right? ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମର ଫୋକସ୍ ହେଉଛି rank ଉପରେ, then why should we think about the pre result now? Because the pre is gone. If pre is gone, now you should focus on means. Why means? Irrespective of the result, because next time ଯଦି ବି ତମର ଏଥର prelims ହଉନି ନା, next time ତ ଭାଇ prelims ଲେଖି ଦବ, prelims ହବ, means ଲେଖିବ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାନି means ପାଇଁ? Then second କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, if somebody is preparing for the mains rigorously and whoever has covered the main syllabus completely, he has no chance to fail in the prelims. If you are covering this time main syllabus, next time you will definitely sell through the prelims and mains as well. But jodi ethor apanko prelim honi, apanko laguchi apan rahi jauchanti, next time madhya apano mains hobaru banchita hebe. You are avoiding your success, right? So that is why, to my point, cutoff will be 60 to 65 somehow. To my point, if cutoff is going to be 62 and 65, irrespective of the cutoff, please start preparing the mains. Now comes to mains ame ko perspective re padhiba. Now dekho, mains ame jetole padhiba, this is Choose General Studies paper 1. Now I will go one by one. First of all, my strategy for the mains preparation will be, you should first prepare paper 4th, 3rd, 2 and 1, and plus your optional. That would be my strategy. कौन सी पिला जदि मेंस पे प्रिपरेशन करू चाहो करिबा दरकार, if you are serious aspirant, if you are hoping this time to have the rank or the next time to have the rank, then prepare with paper 4 now. Why? Because paper 4 हमें फास्ट हमें paper 4 रू प्रिपरेशन करिबा स्टार्ट करिबा दरकार. तुमको सर काहे के भी प्रिपरेशन पेपर 4 रू करिबा? Because paper 4 तमे प्रीलिम्स पढ़िला बेले पढ़ी ही ना हो. It's all together different subject. पूरा कंप्लीटली यार प्रीलिम्स सहित किछि नबा दबा नाही. जेहेतु आमे प्रीलिम्स रे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स किछि ना किछि पढ़ी जे एनवायरनमेंट वगैरह, तो जो पार्ट रे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अछि ताकू टिके अल्प एफर्ट देले हेइ जिवो. बट दिस पेपर कैरिंग 250 marks, at least you have to get 150 marks तुमको दरकार. 150 गुड स्कोर, at least 150 तुमको दरकार ए पेपर रे जदी सिलेक्शन चाहू. 150 marks, but तमे प्रीलिम पूर्वरु केबे पढ़ी ना हो. This is a huge syllabus. एते बड़ syllabus को you should fast cover this one, ethics. तमे आगे ethics पढ़िबा कथा. मु कहली हिस्ट्री, ज्योग्राफी आगुरु पढ़िच. So that is why you should prepare ethics. ना तुमको सर ethics आमे केमती पढ़िबा? तापे OAS Hub आपण मानको पई नै कि आसी क्लास कोर्स, मेंस क्लास कोर्स आमे नै कि आसु आपण माने पई मेंस क्लास कोर्स. Apart from that, mentorship, apart from that, answer writing, ऐसे कथा, ऐसे प्रोग्राम कथा नहीं जो, टेस्ट सीरीज कथा नहीं जो, ये सब हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन दउचे. तेणु ऐसे पेपर को आगे पढ़ंतु. ऐसे रे हमें केमती पढ़िबा, केमिति पढ़िबा? ऑलवेज जहां भी तमे एथिक्स पई पढुछ, सॉरी एथिक्स पई जहां भी पढुछ, ट्राई टू फिक्स इन द माइंड दैट एट द एंड ऑफ द डे द सिलेबस हमें जने काहे देछि, हमको गवर्नमेंट सिलेबस काहे देछि? बिकॉज़ गवर्नमेंट need these qualities within you, or the qualities need to be inculcated into the minds of the people, of the aspirants, because they are going to solve you what common man. ତେଣୁ କରିକି ethics is all about like decision making, and that will help you in the as a good administrator हबारे तुमको help करू. And that is why this part is one of the most important part of civil service.
Now you have to focus on the ethics. The ethics, what you need to write a good answer for the ethics? Example, concept clarity, your own thoughts. That would be very important. Your what I said, your own thought. That would be very important. And how you are replicating the answer. Then apart from that, how you are writing the answer, how you are picturizing, how you are drawing micro diagram केमती यूज करूछ केमती तमे कमिटीज आणुछ कोनसी पर्सनालिटीज रे एथिक्स आणुछ how you are using philosophies into the ethics कमे philosophies ऐड करूछ different philosophies को केमती हमें ethics रे ऐड करूछ बाकी हमें तो हम कोर्स रे हम स्टडी करिवा के बिल्कुल तुमको कहछो का how to have the good marks in the ethics तापे हमें सर रिसोर्स कोन हे परियो all we will try to provide ethics पाई मु तुमको कहबी that is how because you need to have the good understanding what is human indifference and ethics कौन what is human action what is the action यदि हमें कहबे जेमति action दी प्रकार अछि गोटे हला action आ गोटे होछि human action done by human आ गोटे होछि human action right action done by means हमें चोरी करिछ एटा गोटे तमरो action human action done by the human what is human action with conscience suppose तमे सोइला बेले काहको गोटे गोइठा मार देइछ is action of human but not human acts that is what আমি কই human action নো हैना सेटा conscience रे माइंड भी तमे करी ना तो सेमिति আমি কইবা कि human values कोन how values खाली human values तो पड़बे ना how values would be added into the administration values को हमें administration रे केमति यूज करिबा सेमति attitude को हमें administration रे केमति यूज करिबा how aptitude will be used into administration because at the end of the day we are learning this ethics to apply into our day-to-day administration and the governance part right that is why so at the end of the day I should users focus on the what keywords and how you have to use in the administration then we will comes to the part 3 or the paper 3 of your syllabus gs of the general studies paper 3 now this would be second तमरो ए पेपर को हमें ध्यान दबा दरकार कारण this is the dynamic most dynamic एठी तमरो साइंस टेक अछि एठी तमरो सिक्योरिटी अछि एनवायरनमेंट अछि इकोनॉमिक अछि डिजास्टर मैनेजमेंट अछि बायोडायवर्सिटी अछि तो कोठी ना कोठी हमें कहिबा when you are starting to prepare this part for the mains try to discuss this part on the basis of application when it comes to the technology तुमको सर टेक्नोलॉजी हमें केमती पढ़िबा only innovation part nua innovation kon hoichi that could be defense hyper that could be disruption technology hyper that could be artificial intelligence hyper that could be hame कहबा blockchain technology hyper that could be किछि भी hyper like तारो साधारणतः सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रे एप्लीकेशन पता टेक्नो नुआ टेक्नोलॉजी जोटा आछि सिक्योरिटी रो चैलेंजेस कोन अछि तार मैनेजमेंट कोन एनवायरनमेंट रो इश्यूज कोन डिजास्टर रो इश्यूज एंड जहाँ भी तुम रहा बेसिकली क्वेश्चन कौन इश्यू बेस्ड क्वेश्चन आस तणु आपको आम ध्यान देव सेमती मुझे ना पेपर 2 को जो तुम आसुच गवर्नेंस पार्ट को पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी somehow you have gone through for the prelims but interstate relation social justice part आम प्रिलिम में पढ़ी ना तेणु करके पेपर 2 जो आप पढ़ुंट कि मेन्स प्रिपरेशन करूँ मो मत फास्ट यू शुड फोकस सोशल जस्टिस पार्ट बिकज दिस वन तुम प्रिलिम पढ़ी ना आप पढ़ी ना प्रिलिम प्रिपरेशन कला बेले तेणु करके आपन को ए पार्ट रे फोकस करिया को पड़िबो कि यस दिस इज द एरिया वी नीड टू फोकस फ्रॉम हियर व्हाट आर द डेटा व्हाट आर द फैक्ट्स व्हाट आर द कमिटीज रिकमेंडेशन करंट अफेयर्स जहाँ अच्छी हम एथरे जो ऐड करिबा तो ए पार्ट को आगे प्रिपरेशन करंतु जीएस पेपर 2 रो आगे ए पार्ट को पढ़िबे because this part is अपन prelim पे पढ़ी ना then comes to the this part right सेमिति हमें कहबा पेपर 1 को जेतरा हम डिस्कस करूचे we will also discuss fast but that is the special reference to ओडिशा पार्ट को आगे हमें पढ़ी कौन करबे ओडिशा पार्ट आउ को पार्ट को पढ़िबा हमें apart from ओडिशा पार्ट salient feature this part is very important कारण आको आपण माने मेंस प्रीलिम्स में पढ़ी नांती कारण एटा तो पढ़ा ही नहीं सोसाइटी तो आपण पढ़ी नांती प्रीलिम्स पे मेंस पे रखी चंती दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड दिस वन फास्ट तो पेपर 1 रो फास्ट ए पार्ट को ही कवर कर देन आमी ये तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ओडिशा पार्ट को एंड ओडिशा पार्ट योर फोकस शुड बी ए जो डायनेस्टी लिखाई छी ऑलरेडी डायनेस्टी लिखाई छी जेमति कि दीस आर द डायनेस्टीज ऑलरेडी लिखाई छी तो यू कैन आल्सो फोकस ऑन दैट एरिया राइट देन आमी आर्ट एंड कल्चर ये जो आर्ट एंड कल्चर है इस पार्ट तो जो पार्ट मोर थीम हैला
बा मु कहिबार मीनिंग है जो पार्ट आम प्रिलिम्स पई पढिचे ताकू एबे रिपीट न करी try to focus those part you have not gone through only this is for the exclusive part for the mains ताकू focus करा then we will have a mind रे गोटे हमको कैलकुलेशन करिया ये लास्ट कट ऑफ केते जाइथिला यदि हम देखिबा मेंस रो जो लास्ट कट ऑफ जाइथिला ना जो माने जो दिस वाज द लास्ट कट ऑफ एंड द फाइनल कट ऑफ यदि हम देखिबा दैट वाज द फाइनल कट ऑफ लास्ट मार्क दैट मींस एटलीस्ट यू हैव टू हैव मार्क तुमको रखिया पड़ियो केते एटलीस्ट तुमको 900 मार्क रखिया पड़ियो 950 यदि तुम रैंक चाहतो ना एटलीस्ट तुम 950 तुमको मार्क रखिया पड़ियो मेंस रे राइट तो 950 मार्क्स तुम केमति आनियो दैट मींस एटलीस्ट यदि मु कहिबी तो 150 into 4 600 mark right so you have to 150 target करो per GS पेपर रे प्लस ऑप्शनल 150 तो मिली पारे न मिली पारे 140 भी नहीं जाओ तो 140 हेले 280 हे जाउची obviously हम कहबा it would be 800 like what this would be 780 तो 180 जति हम नहीं जावा it would be 280 नहीं जाओ तो लेट्स से 880 मार्क्स तो लगभग हमको 900 मार्क्स मिले प्लस इंटरव्यू मार्क तुमको 130 140 आड हो तो तुमको मिल जाव राइट ओबियसली मु कहबी 140 भी नहीं कि चलो तुमको रैंक गोटे मिल जाव तो एटलीस्ट मो मतरे किछि भी न हो मिनिमम आमको 950 मार्क्स आमको दरकार ही दरकार मेंस रे 950 मार्क्स टू 1000 if you are getting 1000 then it's very good mark 1000 कारण इंटरव्यू मार्क तुमको 150 मिल जाव तो 1150 जो इट्स अ गुड रैंक तुमको मिल जाव तो दैट वुड बी आवर तेणुक प्रत्येक पेपर आमको हर हालत रे 150 बने एंड से टार्गेट को आम केमती अचीव करवा तापे माइक्रो डायग्राम तापे डेटा तापे फैक्ट्स तापे कमिटी तापे रिपोर्ट तापे कोड्स तापे फ्लो चार्ट तापे गुड हैंड राइटिंग गुड प्रेजेंटेशन टाइम मैनेजमेंट स्पेस मैनेजमेंट एंड फ्लो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड ये सब जिनस हमको दरकार अदरवाइज से मार्क आम आनी पार राइट सो दैट इज व्हाई here WASOF is with you right so that we will provide a complete solution for that apart from that join our what telegram channel if joda WASOF ro telegram channel official telegram join apart from that my personal that is what WAS mentor kariki more personal achi mathe join kari paribe right mentorship also provide kara jauchi don't worry for that so this is how to approach the mains ठीक अछि अप्रोच करि पर मेंस को देन आउट के बेस्ट पार्ट होछि मेंस आंसर लिखिबा इज दैट सिंस मतलब फ्रॉम टुडे आई वुड से फ्रॉम टुडे यू हैव टू रीड द करंट अफेयर डेली तुमको सर काहे की बिकॉज़ जो करंट अफेयर हमें पढुते दैट वुड बी यूज्ड एज द एग्जांपल इन द मेंस राइटिंग हम कोन मेंस एग्जांपल राइटिंग रे यूज करी देन किछि डेटा एंड फैक्ट्स इज वेरी नेसेसरी जोटी के हमको टू एनहांस द मार्क इन द पेपर हमें एंड प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर good writing skill that would be improved in what means answer writing part right so comes here and join ways of we will give you our full effort to sell through this examination right and optional test series madhe diauchi optional like geography sociology history PSIR home science these are the also geology these are the optional is being provided test series is there and everything ODI English classes will be also given to you and at the best part will be the mentorship don't worry for that contact number तुमको दिया जो go through in the description box there will be contact for office को come and know everything about the mains programs में हमें जहाँ दरकार ताको know करो then हमें कौन कहवा we will start right मैं तापर start करिबा this is all about ताबेती तो जहाँ को जहाँ दरकार you can also join कहली कि वेस मेंटर ग्रुप माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल सेठी जॉइन करी पचारि परिबो और यू कैन आल्सो कॉल टू मी 7008706453 माय पर्सनल नंबर थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे टू ऑल थैंक यू